10 policemen and their driver were killed yesterday when their rented vehicle, a minivan, was blown up by an IED in Bastar in Chhattisgarh. Maoists used a massive 50 kg IED which flung the vehicle, that was the third vehicle in the convoy, that had no ballistic protection, at least 20 feet in the air. That's right, and now the wreath-laying ceremony is being performed there for these 10 brave hearts who were killed in that Maoist attack in Chhattisgarh. My colleague Anurag is joining us for more details on this. And Anurag, we're seeing the visuals of the wreath-laying ceremony that's currently going on. And while that happens, what have been the questions that have been raised as to why this happened? Were there any lapses? Yes, the preparations are on for the wreath-laying ceremony, but the Chief Minister will reach there at around 10:50 in Dantewada, and between 11 to 12 p.m. the wreath-laying ceremony will be performed. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel and Home Minister Tamirধ্वज Sahu will also pay homage to the 10 DRG personnel who were killed after a Naxal attack on Wednesday. CM Baghel also held a high-level meeting in Raipur yesterday to review the situation in Dantewada following the attack. But Priyanshi, clearly there was clear lapses in the anti-Naxal operation. Questions have been raised over why a road opening patrol did not sanitize the route that a convoy of policemen took before Maoists ambushed them with an IED explosion. And a road opening party usually consists of a small team that checks a route for possible ambush and clears threats ahead of the main convoy. Secondly, there was Ama Pandum, a local celebration which was being celebrated some 100 meters away from the ambush site. And in this festival, basically the children, the kids from the village, they asked for money from the passerby or the elders in the village for buying mangoes. And usually in that particular area, the vehicles travel on a much faster speed, but they stop them, and possibly that can also be a ploy by the Naxals to stop those vehicles. And because there were 5 to 6 vehicles in that convoy, and they were traveling at a safe distance of say 200 to 250 meters away. And after that particular vehicle was blown off, 2 vehicles were just behind that particular vehicle, and they stopped and they also started firing, but there was no Naxal presence there. So if a road opening party was there, they must have seen some suspicious elements, or and they could have prevented the attack. Priyanshi? Right, Anurag, thanks very much for joining us. And as you were pointing out that there are several questions there, and our colleague Zulfikar is on the ground in Dantewada in Chhattisgarh, and he shows us a sense from ground zero of what all those lapses could have been. थाने के पास जो एक नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया था, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं और कुछ यहाँ पे खामियां नजर आ रही हैं कि ये घटना कैसे हुई। उसका एक एंगल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सड़क जो है हाल में ही बनी और इसके रिपेयर भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो चूक हुई, क्योंकि जो विभाग के द्वारा सड़क बनाई जाती है और जो नियम होते हैं कि सड़क में जो गिट्टी डालनी है, मुरुम डालनी है, बालू डालनी है, वो बाहर से आएगी। लेकिन यहाँ की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि यहाँ पे जो ठेकेदार रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे जो सड़क बनाई उसके किनारे ही गड्ढे खोद दिए और एक लंबा ट्रेंच कर दिया। तो ये एक लंबा दिखाई दे रहा है कि 1 किलोमीटर का एरिया, और यहाँ पे अगर कोई नीचे बैठता है तो सड़क से दिखाई नहीं देगा, और नक्सलियों के लिए कोई नियम कानून नहीं। तो इधर जो गड्ढा है, इस गड्ढे से भी एक होल करके, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुकी है और मिट्टी को निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो आईईडी यहाँ से प्लांट किया जा सकता है। तो एक बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि पैसा बचाने के लिए भ्रष्टाचार जो करते हैं अधिकारियों से मिलीभगत के साथ ठेकेदार, तो वो एक कारण यहाँ पे हो सकता है। दूसरा एक और कि ये वो जगह है जहाँ पे आम पंडुम मनाया जा रहा था, और यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे, और यहाँ पे उन्होंने नाका लगाया हुआ था, लोगों से पैसे जो इकट्ठे करते हैं, जो गांव वाले त्योहार मनाते हैं। और उसके पीछे एक और गड्ढा है। तो ये जो गड्ढा इतना बड़ा गहरा है, ये फाइबर केबल बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो ये भी एक जो गड्ढा है वो नक्सलियों के लिए मदद कर सकता है, क्योंकि ये सड़क जो है ना ज़्यादा चलने वाली सड़क नहीं है, कई सारी गाड़ियाँ निकलती नहीं है, भीड़ यहाँ पे होती नहीं है। तो अगर इस तरीके के गड्ढे
खोदे जाएंगे और यहाँ से एक छोटे से ड्रिल करके आईईडी प्लांट किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी चूक जो है वो यहाँ पर नजर आती है कि ठेकेदारों के द्वारा फाइबर केबल जो बिछा रहे हैं, उनके द्वारा जो गड्ढे किए गए वो नक्सलियों को कहीं ना कहीं मदद करते हैं और ये एक आशंका जाहिर की जाती है जिसे प्रशासन को ध्यान में देना होगा। लेकिन जो कल घटना हुई वो बेहद ही दुखद रही, जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए और एक स्थानीय ड्राइवर की मौत हुई है। तो जो जिस तरीके के लूप होल समझ में आ रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहे हैं, उसे प्रशासन को ध्यान में देना होगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की दूसरी वारदात ना हो। और जो सरकार के दावे हैं कि नक्सल बैकफुट में है, तो ऐसे अगर लूप होल छोड़ेंगे और इस तरीके की खामियां प्रशासन के द्वारा छोड़ी जाएंगी और विभाग के द्वारा छोड़ी जाएंगी, तो आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी।